Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So the topic on which we have gathered today is of mindfulness in Salah and mental health. Now, there are three important things in this topic. Let me see. Okay, yes. So there are three important things in this topic for which we have to discuss. It's about the Salah prayer, it's about the mindfulness, and it's about mental health. So we are Muslims and we know about what the Salah is. Yes, the organizer had said to me to go for the bilingual mode. Yes, that's to speak in English and Urdu. तो मैं दोनों चीज़ों में बात करूँगा, दोनों ज़बानों में. तो हम नमाज के बारे में जानते हैं कि दैट इट इज़ द ऑब्लिगेटरी प्रेयर, और हम रोज़ाना 5 बार नमाज को पढ़ते हैं. So we are well aware about it. Now, what about mindfulness? Mindfulness, it's a concept in positive psychology, and there are thousands of researches have been carried out on this topic in this century. Especially, it was introduced in the last decade, of last century, and it is a very known topic. And in the current positive psychology, it is said that there is a dose-response relationship between mindfulness and mental health. If you increase the dose of mindfulness, the mental health gets increased. Mindfulness is what? Mindfulness is bringing your mind in a present moment and going in that situation where you observe and accept the present situation non-critically and non-judgmentally. Researchers have identified that if you just go in a present moment and just observe things, it gives you a soothing effect. It increases your mental health. It decreases your abnormalities, symptomology. Okay? So this is a fact kind of in the current time that mindfulness and mental health are related. Mindfulness is a concept which is believed to be originated from the Buddha school, but from the Buddhism, but it's not totally related with Buddhism. The concept of mindfulness in Buddhism, it's slightly different from the concept of mindfulness in psychology, and we will be going to discuss in the coming part of the session that what's mindfulness in psychology. So surprising thing for you is that I have made the topic mindfulness in psychology and its relationship with mental health, but there is something more for which the researches have to be carried out, and it should be made the topic of discussion, because the psychological effects or the psychological experiences which are happening in Salah, there is something more than mindfulness. Mindfulness is a component of psychological experiences of Salah, but it does not encompass the whole experience of Salah prayer. Okay, it's very important to be mentioned at the very beginning that Salah prayer or Namaz, it has many psychological components. There are many psychological phenomena going in during the Salah prayer. And if Salah is offered according to its essence, and if Salah is offered according to its true nature, then those psychological phenomena express themselves, and they just don't increase the mental health. They build the personality. They increases your moral potential. They cultivate ethical inclinations in the person, and it has a long list of benefits which does not just cover in the mindfulness. So it's important to mention that mindfulness is just a single component of Salah prayer, and it does not encompass all phenomenology of psychological benefits which are being given by Salah prayer.
So in the current session, due to time constraints and one cannot discuss about everything in a single session. So in a single session, specifically in this one, we'll be going to just discuss about the psychological benefits, particularly mindfulness, which we are doing in Salah prayer and what are its effects. In the coming part of my discussion, I will be telling you what mindfulness is, how the mindfulness concept of psychology is related with the concept of mindfulness in Salah. And third important thing on which I will be discussing in the current session is how we can produce mindfulness in Namaz or in Salah prayer. Okay, so let's go, shifting gear. So the first thing is about Salah prayer in Islam. We know that Salah, also known as Salat, in Urdu we say it's Namaz. It is the formal prayer performed by Muslims 5 times a day. Yes, we perform it. It's the obligatory Muslim prayer, and it's one of the pillars of Islam. Now it's important. Think, what are the components of prayer? Fuqaha have made the categorization of components according to their knowledge. But if we go for the direct components of Salah prayer, what are these components? I have digged out these components specifically in relation to the psychological experiences. There are 4 major things which we do in Namaz. Okay? At the start of Namaz, you make a Niyyah. Niyyah is just not simply uttering the words with your mouth. It is a whole psychological experience for which I will going to explain in the coming part of the session. Next is recitation from Holy Quran. What we do in Namaz, we recite some verses from the Holy Quran. The wajib is Surah Fatiha, and then we add something with Surah Fatiha, the whole Quran. We do the qiraat of it. Then there are physical movements. For example, either it's the rafa yadan, haathon ka uthana, haath bandhna, ruku karna, sajda karna, tashahhud mein baithna. These all are the physical movements. So the third thing is about the physical movement, and fourth one is the supplications, du'aएं जो हम नमाज के दौरान बोलते हैं, मांगते हैं. For example, इसमें तस्बीह भी है, तहमीद भी है, और तहलील भी है, और दुआ भी है कि हम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं. Sometimes we glorification of Allah. For example, at the very beginning of Namaz, we say Sana, and in Ruku, we say we offer the Tahmeed, we offer the Hamd of Allah, Subhana Rabbiyal Hasim. And in such that, and then in the end part of the Namaz, we say some supplication, we ask for some du'as. So these are the 4 major things. These are the 4 major components, and I will be relating them with the psychological experiences in the coming part of this discussion. So summing up, it's intentions or the Niyyah, it's recitation, it's the physical movements, and then the supplications. Now, what Islam says about mindfulness in Salah in Islam. Very famous ayat of Surah Mu'minun, the first and second ayat. It's I think Surah Mu'minun, it's the 23rd Surah of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Translation as quoted is that successful indeed are the believers, those who humble themselves in prayer. What does it mean? It means that those believers who have developed the attentive humility in their prayers, they're indeed successful. It's 100% surety that they are successful. And in their success, there is no doubt. Okay? So, मतलब क्या है कि वो मोमिनून जिन्होंने अपनी नमाज में खुशू हासिल कर लिया, वो फलाह पा गया. This is a very famous ayat of Holy Quran. Now, what does khushu mean? Khushu is a word which is derived from a word khasha, which means to humbly, submissive, or to bow down in respect and fear. क्या मतलब? कि खुशू का मतलब ये है कि झुक जाना,
किसी की इज्जत और ताज़ीम में जब आपकी आवाज़, आपका दिल, आपकी नज़रें, आपका सब कुछ जब किसी के सामने झुक जाता है, तो that is called as the khushu. Now, khushu refers to the state of mindful humility. Khushu is just not a humility, it is also called as the attentive humility. It's a humility in which there is also an element of attention and concentration. We give a concentration to elements of Salah, and due to the phenomenon of giving concentration and attention to those aspects of Salah, an aspect of humility develops, and that aspect of humility is called as the Khushu. So what are the elements of Khushu? There are two elements of Khushu. First element of Khushu is being mindfulness of action and purpose. That is that आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. That is, you must be aware that what you are doing and for whom you are doing. These are the two important elements of mindfulness, and especially related with Khushu. This means a conscious understanding of every act of worship and knowing it is performed for the sake of Allah. बहुत सादी सी बात है. आपको पता हो कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, what you are doing and for whom you are doing. Mindfulness इसे कहते हैं कि to come in the present moment. So when you're offering prayer, when you're offering salah, for every word you should be coming to the present moment and just observing what you are saying and observing what you are doing. If you are in takbir or tahmeed or tahleel or tasbih or qiraat or ruku or sajda, whatever you are doing, you have to observe what you're doing. And second is, what's the purpose of doing, for whom you are doing? That is for the sake of Allah. And second aspect of khushu is that when you give attention to what you are doing and for whom you are doing, it automatically brings humility in you. Humility is, what does it mean? It means to bow down in respect of the someone. Humility means that when you know that Allah is seeing you and observing you, and you see that someone who is the king of this whole universe is seeing you, is observing you, and you have came here to talk to that Zat, that automatically brings the sense of respect in your actions, and it just bow your arms and it just bow your head, and when you bow your head, it brings the internal sensation of respect, and that respect is called as the humility. Humility is not the selflessness or the kind of inferiority complex. Humility is giving a respect to someone more than yourself. Humility is about bowing to the someone because of the respect. Okay, so what's the khushu in namaz? Khushu in namaz, it simply means two things. The first is that you know that you're offering, that you know that what you're doing and for whom you are doing, and as a consequence of knowing that what you're doing and for whom you're doing, you develop a sense of respect for that Zat for whom you are doing, and it is called as khushu. So in this whole discussion of khushu, the central element is mindfulness. The first step is of mindfulness, which is know what you're doing and for whom you are doing. Okay, and what are your actions and what is the purpose of your actions? So it's important. And that's why I've said in the beginning that there are many psychological benefits of Salah, and there are many psychological elements of Salah. We, in this current discussion, will be only focusing on mindfulness, which is deepened awareness about your actions, intentions, their purpose, and develop a positive attitude towards all of these things. Okay? So, that was about mindfulness. Now, what theorists say about mindfulness in Islam, कि फुकहा इसके बारे में क्या बात करते हैं, how they see mindfulness. Is it a compulsory element, optional element, obligatory element?
what they say about it. You know, jurisprudential perspective, or the perspective of fuqaha, it's something very easy in this particular sense. If they have made a very strong stance on it, perhaps it would be very difficult for people to come towards this positive thing. All four great leading scholars of Islamic jurisprudence, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, and Ahmad bin Hanbal, they say that obligatory mindfulness is at the start of prayer. When you say takbir tahrimat, at least bringing attention to the prayer at the very beginning, they say that is compulsory. If you are not aware about what you are doing right now, यानी आप नमाज के लिए जा रहे हो, आपको इतना भी नहीं पता कि मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ, ये 4 रकात पढ़ रहा हूँ, 2 रकात पढ़ रहा हूँ, किस वक्त की पढ़ रहा हूँ, and you are not in the present moment, at least this much minimum, your prayer is not valid according to them. But if you at least know that I'm going to offer prayer of Zohar and I'm offering the 4 obligatory rakats of Zohar, and you start with that much limited awareness, then that mindfulness is enough according to Islamic jurisprudence. And for them, the mindfulness means attention in the other aspects of the prayer. It's not compulsory. It's important due to them, but it's not compulsory. For example, if some person has offered 2 rakat or 4 rakat and his mind didn't go towards the prayer, and he, after the completion of namaz, he doesn't know what he did, what he recited. So if you ask the fuqaha, they will say that his prayer is valid. But spiritual perspective, something different. Ghazali ने ना एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी थी. उसने कहा था फुकहा की मिसाल ना डॉक्टर्स की तरह है. यू नो, डॉक्टर्स क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास एक पेशेंट पहुंचे, ओके, और वो पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, इमरजेंसी में आया, उसकी पसलियाँ टूटी हुई हैं, उसकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, उसका ब्लड लॉस है, उसकी इंटरनल इंजरीज हैं, कोमा की स्टेट में भी अगर है, सिर्फ उसकी अगर ब्रीथिंग चल रही है ना, तो या उसकी हार्ट बीट चल रही है, तो डॉक्टर्स क्या कहेंगे? पर्सन इज अलाइव. गजाली का कहना यह है कि बेशक वो बंदे की हड्डियां टूट चुकी हैं, उसकी पसलियां टूट चुकी हैं, वो कोमा की स्टेट में चला गया, इवन इफ his brain is irreparably damaged, still that person is alive according to doctor. Same like वो कह रहे कि एक नमाज के बारे में जो ये फतवा है 4 फुकहा का regarding mindfulness, it's for the life of नमाज. वो कह रहे हैं कि हाँ, ये नमाज मौजूद है एटलीस्ट, क्योंकि उसमें सिर्फ एक हार्ट बीट है, और वो हार्ट बीट क्या है? माइंडफुलनेस एट द स्टार्ट ऑफ प्रेयर. लेकिन गजाली के नज़दीक ऐसी नमाज जिंदा तो है, लेकिन चलने फिरने की काबिल कोई नहीं, उसमें जान कोई नहीं है, उसमें कोई ताकत नहीं है. जिस तरह एक फंक्शनल ह्यूमन बीइंग होता है जो चल फिर रहा होता है, वो फंक्शनल नमाज नहीं है. इट विल नॉट हैव द बेनिफिट्स फॉर द पर्सन. So Ghazali says that namaz, which is performed with mindfulness, that namaz is only valid namaz, and all benefits of prayer, they are promised with the mindfulness of namaz. They are just not promised with the life of namaz. Okay, so he says that Islamic jurisprudence, this just talks about the life and that heartbeat है कि नहीं है, लेकिन जो माइंडफुलनेस के साथ नमाज पढ़ी जाएगी, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ये है कि फिर वही एक असली नमाज कंसिडर की जाएगी. ओके, वेल गोइंग. We took this topic for our research, and the paper was published in 2017. Research was conducted in 2015 in this area by me, by my supervisor, my teacher, Professor Dr. Tahir Khalili, and my colleague Irshad Ahmed. We conducted a research on this topic of mindfulness, and it was published in Journal of Religion and Health
So हमने research की the research design was exploratory descriptive research. We took a data of 174 participants, and they were from three major cities of Pakistan: Islamabad, Rawalpindi, and Abbottabad. And research was conducted between April 1st and May 4. So convenient and purposive sampling was used for this research. We actually took a data of three major groups: one who were not offering prayer, other who were offering prayer, and those जो कि नमाज पढ़ रहे थे उनके पीछे हमने डाटा तो खैर बहुत ज़्यादा कि उसमें से फिर हमने फिल्टर आउट के पर्पजली though हमने वो participants लिए, those who have reported that they were offering prayer with mindfulness in past month, and those who were not offering, usually those who were not offering prayer with mindfulness. लोगों को पता होता है कि वो mindfulness से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे. So we designed a questionnaire जिसमें उनसे पूछा गया कि for the past month in following aspects of the namaz, how much your attention go towards Allah subhanahu wa ta'ala, or how much you were aware about the things which we're doing in namaz for the past month. So it was a self-reported mirror in which the participants reported their mindfulness during namaz in the past month. And then we used another scale which is ran mental health inventory, and it measures the mental health across the 7 variables, and which I think 4 are about the positive functionality. 3 about the positive functionality, and 4 major psychological disorder symptoms, including depression, anxiety, stress, and something like this. So Ryan Mental Health Inventory checks the mental health for the past 1 month. So mindfulness, we have seen their mindfulness for the past month, we have seen their mental health for the past month, and then analysis were run. And what our research revealed? Our research showed that those who are offering prayer regularly, they have better mental health as compared to those who are not offering prayer regularly. First was that it was evident to research, and a linear regression analysis have confirmed it with a significance level of 0.05. Then those who were offering prayer regularly, in them, there were 2 groups: those who were offering it with mindfulness and those who were not offering it with mindfulness. Our research revealed that those who were offering prayer with mindfulness had significantly better mental health as compared with those who were not offering with mindfulness. तो हमारी रिसर्च ने क्या बताया? पहले वो जो कि नमाज नहीं पढ़ रहे और दूसरे वो जो नमाज पढ़ रहे. Our research revealed in Muslim population, university students, those who were offering prayer regularly, they had better mental health as compared to those who are not offering prayer regularly. तो ये जो बोला जाता है ना कि दीन से दूरी, it's a fact, it's proved by research, and there are a lot of researchers which have proved that when you come near to the religious practices, your mental health increases, and going away from the religious practices, it has some determinantal effect on your mental health, okay? So it's a kind of confirm. Second thing our research revealed that just not offering a prayer is good, but offering a prayer with mindfulness, it increases your mental health. So those who are offering with mindfulness, their mental health was significantly better as compared with those who were not offering with mindfulness. And positive correlations were found with mental health and cognitive functioning of mindfulness in Salah, and negative correlations were found with psychological distress, depression, and anxiety. So it was our research published in Journal of Religion and Health, carried in 2015. It's very old research. I think 9 years have gone for this research, and a lot have to be done more in this area. But at least we are confident to say that mindfulness in Salah is related with better mental health. Okay, ये तो सारी होगी रिसर्च की बात. अब आते हैं नेक्स्ट काम की बात पर कि चलो ठीक है, माइंडफुलनेस अच्छी चीज़ है, साइकोलॉजिकल रिसर्चेस जो कितने सालों के उन्होंने बता भी दिया कि माइंडफुलनेस का मेंटल हेल्थ से ताल्लुक है. हमारी रिसर्च ने भी डिस्कवर कर लिया कि माइंडफुलनेस जो है वो जो माइंडफुलनेस के साथ नमाज पढ़ते हैं उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है. और गज़ाली का पर्सपेक्टिव भी हमने देख लिया कि गज़ाली ये कहता है
स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि माइंडफुलनेस के साथ जो नमाज, दैट्स द ओनली वैलिड नमाज। उसके बगैर वाली जो नमाज है वो फुकहा तो से कहेंगे हाँ वो जिंदा तो है, बट इट्स नॉट ऑफ एनी वर्थ। इन कुरान के जो आयात है वो भी हमने देख ली कि जो माइंडफुलनेस के साथ नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद जो ह्यूमिलिटी के लेवल तक पहुंच जाएंगे उस माइंडफुलनेस के रिजल्ट में, they are indeed successful. And it comes in the many times in the Holy Quran that just not offering the prayer but with khushu, that's important, and with consistency definitely. Okay, khushu और consistency में फ़र्क है। तो दाइमून का आई थिंक लफ्ज़ आता है कुरान में, तो वो क्या है कि हो सकता है कि मैं बहुत कम नमाज पढ़ता हूँ लेकिन उसके या उसको मैं खुशू के साथ पढ़ता हूँ, बट Quran expects something more from you. It's just not that that your prayer should be of quality. There should be a consistency in your prayers. So it's another topic, but it was just discussed because thought has been freed. So now there are concerns of people कि हम नमाज में तवज्जो किसको दें, हमारा नमाज में ध्यान नहीं रहता, हम distractions को avoid कैसे करें, क्या सोचें क्या ना सोचें, what psychology says about it. So we will bring a wisdom of mindfulness from psychology, and we will see that how a mindfulness can be cultivated or developed during Salah prayer. And it's almost half an hour, and till now we've discussed about the benefits of mindfulness in prayer. And in the remaining part, I will be discussing that how to develop mindfulness in Salah prayer. Okay, so let's do. So how to develop mindfulness in Salah. Now it's a point of discussion of the second part. So before going how to develop mindfulness in Salah, as I have said that we will be bringing a wisdom of psychological sciences of mindfulness, and based on that wisdom I'll be giving you hands-on tips to develop mindfulness in Salah. So before giving you tips, first we have to see what actually is mindfulness. I have given you a general overlook and a broad definition. Now we're going for a specific definition of mindfulness, that what it is according to psychology, what are the components of mindfulness, and what are, or we may say in the simple words, what are the ingredients of mindfulness. We will take those ingredients from the concept or the wisdom of psychology and exactly use them in the psychological work and see that how it guide us for developing mindfulness in prayer. So what is mindfulness? Technical definition, we can change with a little bit change in the synonyms in different textbooks, but that's a correct. So for definition, mindfulness is awareness that arises through paying attention in a particular way. So common thing in our aspect of mindfulness is paying attention. यानी आपने अपनी तवज्जो को किसी तरफ मलूस करना है, आपने अपनी attention को किसी चीज़ पर लगाना है. Mindfulness जिधर भी लफ्ज़ आएगा उसका मतलब क्या है कि you have to pay your attention on some particular thing in a particular way. तो वो क्या है? Paying attention in a particular, वो particular way क्या है वो उसको हम आगे explain कर रहे हैं. यानी particular way है कि that your attention should not be a free floating attention. For example, I'm sitting here when we are using a mobile, हम लोग मोबाइल की तरफ attention, या मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कभी एक चीज़ देख रहा हूँ, कभी दूसरी देख रहा हूँ, कभी एक चीज़ सोच रहा हूँ, कभी दूसरा चीज़ सोच रहा हूँ. This is not mindfulness. Okay, maybe I am in the present, but it's not mindfulness. Mindfulness is in a particular way paying attention. Means mindfulness में सबसे पहली चीज़ क्या है, that with intention, you plan to give attention. Mindfulness is not a free-floating attention. You plan to give attention with intention of paying attention. That is an aspect of mindfulness. Second, you pay attention in a present moment. Maybe you're thinking about something in the past or future, but that's not mindfulness. Mindfulness is when you bring your mind in a present moment. And third major aspect in mindfulness is that you should be non-judgmentally observing things. Okay. You pay attention for what? For observing aspects or the elements. So while you're observing things, it should be non-judgmentally. We will be discussing about all these points. So we discussed that what अच्छा हम attention किसको देते हैं? Attention in a present moment.
तो अटेंशन जो है इंटरनली अपनी बॉडी को भी दी जा सकती है. And the best and the most common exercise which we use in mindfulness is about deep breathing, where you give attention to your breathing. Okay, it may be given to the external environment. For example, mindfulness की चीज़ें क्या हो रही है? For example, mindful eating में पहले आप खाने को देखते हो, you give intentionally give attention to the food. Okay, mindful eating, mindful walking, mindful bathing, mindful swimming, mindful mindful brushing even. So ये वो चीज़ें जो mindfully आप करते हैं और ये वो बाहर की दुनिया से related. So you give attention to them. Sometimes we just observe the natural phenomena, like or you just observe nature. For example, you're taking a cup of tea and sitting at the sunset to see the sunset. So you're intentionally observing that how the sun is moving towards the other side of mountains. So it's also observation. Then second is it is with purpose, means with intention, and you deliberately shifting attention to the present moment from the past and future, and you remain in the present moment, and you are completely acting non-judgmentally. You're not criticizing your thoughts or feelings. You're not labeling your thoughts and feelings. That's very important. And you're not attaching yourself with your thoughts and feelings. It's important. You just observe your thoughts and feelings and sensations. Mindfulness का concept ये कहता है कि जब आप present moment में आते हैं, चीज़ों को observe करते हैं, so you simply observe them. You don't attach them with yourself. Okay, that's important. नहीं तो भी कह रहे हैं, इस concept को मैं लाकर आपको भी थोड़ी देर में जब नमाज में explain करूँगा, तो आपको पता चलेगा कि हमारी बहुत अटैचमेंट्स बनी होती हैं और हम बहुत क्रिटिकल होते हैं अपनी नमाज के बारे में. तो वो जो हमारी क्रिटिकल एलिमेंट है रिगार्डिंग प्रेयर, ये जो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है फॉर अबाउट बीइंग नॉन जजमेंटल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कल्टिवेट मेंटल हेल्थ. ओके, सो व्हाट्स important in the being in the non-judgmental attitude, it's just that you should observe your thoughts and feelings without criticism and without attachment. So अगर हम इस definition से पकड़ें तो हमें क्या पता चलता है कि mindfulness क्या क्या है. Components of mindfulness, हम इससे लें या ingredients लें mindfulness के, तो उसमें हमें 3 ingredients मिलते हैं. The first ingredient is of intention, that you're planning to give attention. That's intention. Then second is you give attention, and third is attitude. Your attitude should be positive. You are non-judgmental. You cultivate curiosity and you cultivate kindness, and it's a non-judgmental attitude. Okay. तो हम इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स को लेकर आएंगे जब प्रेयर में, नमाज के लिए. तो हम देखते हैं तो कैसे ये तीनों कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे. So components of mindfulness in Salah, let's talk about them. The first component is intention. यानी हमने देखी ingredients of mindfulness क्या है in psychology. अभी हम उन ingredients को लाके हम यहाँ पे translate करके देख रहे हैं कि how these ingredients come in Salah. Okay. So the first thing is intention. Intention means setting the stage. इसको हम नियत भी कहते हैं. That जिसको हम कहते हैं शुरू में आप नियत करते हैं. That is intention. Second is attention, that you pay attention to different aspects of Salah. And third would be the attitude of kindness, that you will be going with the kindness, curiosity and non-judgment till attitude for prayer. ये बातें हैं अभी मैं इनको तेज़ी से तब कुछ रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. Okay. So first thing is intention, निय्या. एक तो वो नियत है ना जो हम लोगों ने मदारिस में सीखी, हम लोग बचपन से बोलते रहे, मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज की, फ़र्ज़ है, सुन्नत जो भी पढ़ता हूँ ख़ास वास्ते अल्लाह के मेरी तरफ खाना काबा शरीफ. These are just words. Now, what is psychological explanation of niyat or intention? When we're bringing wisdom of mindfulness in namaz, we should see that what we are doing and why we are doing. ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया कि mindfulness is that कि आप खुद से अपने mind को present moment में लाएंगे, and you have to see why you're bringing your mind in the present moment.
And what is the purpose of bringing your mind in the present moment? You have to see it. Niyyat, it's just not कि हम सिर्फ ये ज़ुबान से बोल दें कि मैं नमाज की नियत कर रहा हूँ. Niyyat is preparing yourself for a complete activity which is full of psychological benefits. ठीक है. तो लोग अगर ये सवाल करते हैं कि हमारी नमाज में तवज्जो नहीं होती और वो नमाज पढ़ने के लिए इस तरह आते हैं कि बस वज़ू किया और फ़ौरन से आके नमाज के लिए खड़े हो गए, दूसरा नमाज में तवज्जो आएगी भी नहीं. You have to give some time to your mind to come to prayer before the start of prayer. Okay? आप अगर कोई भी एक्टिविटी करते हुए आ रहे हैं, आप तेज़ी से भागते भागते आ रहे थे और आके आप मस्जिद में आके खड़े हो गए हैं, अभी आपके माइंड में इतनी बातें चल रही थी, आप बात करते करते खड़े हो गए हैं, या अभी आप कुछ भी काम है, मोबाइल सुनते सुनते मोबाइल बंद किया और आप फ़ौरन से नमाज के लिए खड़े हो गए, तो आपकी नमाज में तवज्जो नहीं हो पाएगी. नमाज में तवज्जो के लिए आपको पहले नियत करनी पड़ती है. नियत का मतलब क्या होता है कि आपने अपने माइंड को पूरा शिफ्ट करना है नमाज की तरफ. वो माइंड को शिफ्ट करने के लिए आपके पहले जितनी थॉट्स उन सब को कूल डाउन करके साइड लाइन पे करना पड़ेगा. नमाज से पहले आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको इंटेंशन यानी अपनी नमाज में अपनी तमाम थॉट्स को अलाइन करना है कि दैट यू विल गोइंग फॉर प्रेयर. इसको मैं एक और एग्जांपल से बयान करूं कि ऐसा नहीं होगा कि जब कोई फ़ौज किसी जगह पर लड़ने के लिए जाती है तो उसके दस्ते को पहले सीधा किया जाता है, उनकी तोपों के रुख पहले किसी डायरेक्शन में किए जाते हैं, या मिसाइल किसी तरफ फायर करना है तो उसके लिए पहले पूरी प्लानिंग होती है, उसका सब कुछ डिसाइड किया जाता है किस डायरेक्शन में जाके लगेगा. एक एरोप्लेन ने भी उड़ना है तो उसका देखा जाता है उसका रूट क्या होगा, उसने कितने एल्टीट्यूड पर पहुँचना है, कितनी हाइट पे जाना है, फिर कैसे उसने वर्कआउट करना है. नमाज के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप नमाज में एक तो आपकी बॉडी काम है, दूसरा आपके थॉट्स सारी नमाज में इस्तेमाल हो रही है. तो उन थॉट्स को पहले एक डायरेक्शन देनी है, उन्हें सेट करना है, उन्हें अलाइन करना है, उन्हें लाइन अप करना है, एक डायरेक्शन देनी है. अगर सारे थॉट्स मिक्सड अप हैं नमाज से पहले और आप नमाज स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट इंटेंशन और विदाउट निय्या, तो वो थॉट्स डायरेक्शन में जब नहीं होंगे तो वो नमाज भी पूरी गुडमुड आपस में ही लगी रहेंगी. Intention is about giving a direction to your thoughts. It's about aligning your thoughts towards a specific direction. तो इनका एक free floating mind से एक organized mind की तरफ ही आपको लेकर आती है. जो आपके mind में extreme चल रही है thoughts की, वो उसकी कोई direction नहीं है, उसको एक direction provide करती है नियत. ठीक है. So Niyyah is just not simply about saying a word. It's just not an event. It's a process. It's important to note. Niyyah is a process of shutting down a mind and starting up a mind, shutting down previous thoughts and starting up new thoughts. It's about shifting the focus from the past towards the present and utilizing that focus to get a maximum from the ओके. तो अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे अचीव होगा, कि हम नीयत के साथ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स कैसे हासिल कर सकते हैं. सो मैंने कहा ना कि ये एक इवेंट नहीं है, इट्स अ प्रोसेस. प्रोसेस में बहुत सारे इवेंट्स भी शामिल होंगे. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू जस्ट शट डाउन और टू मूव फ्रॉम द थॉट्स व्हिच आर गोइंग इन पास्ट टू इट्स प्रेजेंट. ओके. So, talking about intentions, so इसके लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसी काम प्लेस को ढूंढें जो कि distraction free हो, because as I've said that you have to shift your mind. You're going to give a purpose, you're going to give purposeful attention towards something, so you have to shift your mind. तो अपने माइंड को शिफ्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने माइंड में जो पहले सारी चीज़ें उन सबको क्वाइट किया जाए. और माइंड में चीज़ों को क्वाइट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है दैट योर सराउंडिंग्स शुड बी calm and quiet. So try to find some quiet place. Go there a place. नमाज शुरू करने से पहले if it's better to just sit and take some deep breaths to just relax your body and your mind.
That's important for mindfulness. If you can't sit, you're very much low of the time and आप ये नहीं कर सकते. If you're just standing, just give some time to relax your body and mind, to stop thoughts which are happening in your mind and to bring your mind in the present moment. It's important to cultivate mindfulness, okay? तो बेस्ट यही है कि आप बैठें, डीप ब्रीथ करें, टेक सम फ्यू ब्रीथ्स और ताकि आपका माइंड अभी प्रेजेंट मोमेंट में आए. Then engage your senses. Mindfulness is all about engaging your senses, taking the information from them to bring your mind in the present moment. ठीक है? अच्छा, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. आपके attention grabbing जो चीज़ होती है, that is perfume. और एक सुन्नत है कि वो खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है. नमाज के वक्त अगर आपने कोई परफ्यूम लगाए, try to take a deep breath and inhale that smell. And you know the olfactory stimulation, it has huge effect in grabbing attention. ठीक है? तो अगर आपकी pleasantful smell है, perfume or something like it, it will take attention. ठीक है? At least उस स्मेल को इतनी देर तक नहीं रहती, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए होती है, but it brings your mind to the present moment, okay? Then it's important for 1 or 2 seconds, just close your eyes, visualize yourself in front of Kaaba, then broaden your experience and visualize yourself in front of Allah subhanahu wa ta'ala. When you visualize yourself in front of Allah subhanahu wa ta'ala, it automatically shuts down all thoughts which are going in your mind, and it brings your awareness towards the present moment. Okay? अच्छा, अब एक ये बहुत बड़ा सवाल किया जाता है कि अल्लाह ताला को विजुअलाइज कैसे करें, या अल्लाह ताला को की तरफ कंसंट्रेशन या अटेंशन कैसे लेकर जाएं. I'll be talking about it in more detail in the one coming slide. इसको बस मैं इतना फ़िलहाल समझाऊँ कि आप इसे यूँ समझ लें कि जब आप टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो आप दूसरे बंदे को देख नहीं रहे होते, या फ़ोन मोबाइल कॉल पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता होता है कोई आपकी बैठ के बात सुन रहा है, राइट? जब बोल रहे होते हैं आप सोच के बोलते हैं कि मेरी कोई आवाज़ ऐसी वैसी ना निकल जाए, तो आप हर चीज़ को बड़े परफेक्टली सोच कर बोलते हैं, ठीक है? Because you know that someone is listening to you, right? The person is not seeing you how you're behaving, but you know that the person is listening to you. और अगर इसी मिसाल को ज़रा से और बढ़ाऊँ, अगर कोई बंदे से आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे होंगे, फिर हो सकता है आप लेट के ना बात करें, आप बैठ के बात करें, आप सोचेंगे मैंने भी कपड़े कौन से पहने हैं, मैं ठीक तरह बैठा हूँ कि नहीं बैठा, क्योंकि अगला बंदा मुझे देख रहा है. So that is what expected from us during namaz. It is called as feeling of ihsan. أن تعبد الله أنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك. कि आप ऐसे इबादत करो गोया आप अल्लाह को देख रहे हो, यानी कि आप कंसंट्रेशन इतनी हो that you are visualizing Allah. अब अल्लाह को विजुलाइज करने का मतलब क्या? फ़إन लम तराहु फ़इन्नहु यराक. अब आप अल्लाह को देख तो नहीं सकते, लेकिन एक आपके माइंड के बीच में एक कॉन्सेप्ट आएगा कि अल्लाह आपको देख रहे हैं. The internal awareness that Allah is seeing you and listening you. Just take this analogy of phone call, audio call and video call. It's just not a simple audio call, it's a video call in which in which the camera other side is off, but camera on your side is on. And he's seeing you, he's listening you and observing you. इसको एक और तरह से देख लें, जब CCTV कैमरास लगे होते हैं किसी जगह, तो हमें नहीं पता होता हमें पीछे बैठ के हमें कौन देख रहा है, वो बड़ा है, छोटा है, मर्द है, औरत है, वो देख रहा है, या कोई आजकल AI देख रहा है, we don't know. But someone is seeing from there, so we know that someone is seeing, so we behave appropriately. Same is about bringing awareness that Allah subhanahu wa ta'ala is seeing you, is listening you. When you bring that awareness to you, it automatically brings humility in your body, in your heart. Okay, so it's about visualization. Then we have discussed about it. Intention is also about the cognitive engagements. It's about when you mentally engage in intention of offering prayer. So it's important. तो उसके लिए क्या है कि आप
अपने माइंड में बनाते हैं कि नाउ आई विल बी गोइंग एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट रिचुअल्स and through these, and Allah subhanahu wa ta'ala will be observing me during these rituals, and I'm performing it just for the sake of him, and that's all. Cognitive engagement. Now it's important, जब आप नमाज में जा रहे हैं तो when you're going for a takbir tahrim, एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब आप नमाज पढ़ो तो अपने हाथों को जो तो उठाते हो तो गोया कि तसव्वुर करो कि अल्लाह ताला के सामने आप उनकी तरफ हाथ उठा के अल्लाह अकबर कह रहे हैं. It's like greeting someone, you know, when you go, oh, hi. So when we go to Allah, towards Allah subhanahu wa ta'ala, we say Allah Akbar. We are trying to get attention of him, always giving attention to us, but it's actually we're trying to give our attention towards him. While raising hands, just try to bring your mind in the present moment. Look at your hands. Your hands are being raised. It will bring you in the present moment. And you just visualize him, means you just bring it in your awareness that he's seeing you, observing you, listening you. And you say Allahu Akbar. And it's like greeting him and saying him this, I now for a few minutes, I've been doing something and I want you to observe me, and I will be trying to give my attention to you and see that what I'm doing. So ये है वो intention का process, ये है वो नियत का process जो कि सिर्फ एक अल्फाज कहने से नहीं होगा. आखिर में हम अल्फाज तो कहेंगे okay, I'm offering this prayer, हम लोग present in the here and now. This is a mindfulness नियत. एक वो नियत है जो कि फुकहा बताते हैं कि मैं 4 रकात नमाज पढ़ूँ अल्लाह के लिए, तो उसमें थोड़ा सा हमें mindfulness का जुमला ऐड किया that I will be present in the here and now. I will be present in the here and now to talk with Allah subhanahu wa ta'ala. This is a verbal affirmation that will align your thoughts to come in the present moment. Okay, so it's about intention. So summing about intentions, what are intentions? Intention is just not an event, it's a process of shifting your mind to the present moment. So ये process है जिसमें आप अपने mind को present के साथ align करते हैं और अपनी thoughts present moment में shift करते हैं. It's about intention. Second is attention. Attention is purposefully focusing on something. Okay, इसको हम तवज्जो कह सकते हैं. It's important thing which take us for Khushu. Okay, तो अब हम देखते हैं attention किस तरह आएगी. अच्छा, अटेंशन के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ों के बता दूं कि माइंडफुलनेस के बारे में आपको जाने कि माइंडफुलनेस क्या है, क्या नहीं है. माइंडफुलनेस इज़ नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द माइंड. माइंडफुलनेस इज़ ऑल्सो नॉट अबाउट स्टॉपिंग योर थॉट्स. ठीक है, इसको यूँ कहूँ कि माइंडफुलनेस ये नहीं है कि आपने अपने माइंड को इंटेंशनली शट डाउन करना है, खुद ज़ोर ज़बरदस्ती पकड़ के अपने थॉट्स को रोक. लोग कहते हैं जी हम नमाज में ख्यालात को कैसे रोकिए. आप अपने माइंड को स्टॉप नहीं कर सकते. इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग. व्हेन यू आर अवेक, व्हेन यू आर इन द कॉन्शियसनेस, यू कैन नॉट स्टॉप योर माइंड बट यू कैन शिफ्ट योर माइंड. ठीक है, सो दैट्स अ की माइंडफुलनेस कि आप अपने माइंड को शट डाउन नहीं कर सकते नमाज में. आप नमाज में जो कर सकते हैं वो ये है कि आपने अपनी थॉट्स को अलाइन करके एक डायरेक्शन में शिफ्ट करना है. इसको यूँ समझें कि माइंड की एक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक झुमगट्टा है लोगों का. आप उस झुमगट्टे को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि ये देखें कि उन सब के अंदर एक पैटर्न और सीक्वेंस हो जाए और उन्हें किसी ख़ास डायरेक्शन से वो अंदर आए और किसी तरफ से बाहर जाए. लोगों ने वहाँ से गुजरना है एक जगह से. आप उस जगह से लोगों को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं. तो सेम लाइक जब आप नमाज में आते हैं, आपने अपनी थॉट्स को स्टॉप नहीं करना. आपका माइंड उस वक्त काम करेगा नमाज में. नमाज में इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अपनी थॉट्स को शिफ्ट करना है किसी ख़ास डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन किसकी तरफ आपने अपने थॉट्स को शिफ्ट करना है. यू हैव टू लर्न दैट डायरेक्शन. अगर आपको उस डायरेक्शन का पता नहीं है
तो उस डायरेक्शन में आपकी थॉट्स जाएंगी नहीं, तो वो फ्री फ्लोटिंग ही करती रहेंगी. ओके, सो माइंडफुलनेस इज अबाउट यूजिंग द माइंड better to वो क्या है कि engaging your mind in a productive way that brings calmness and focus and being present, fully immersing yourself in the present moment and focus on the extreme present. और नमाज में जब हम पढ़ने जा रहे हैं, there are two things which are extreme present. Okay? Extreme present में दो चीज़ें क्या हैं? First one is you and other one is Allah. नमाज में ये दो चीज़ें present हैं. क्योंकि नमाज में कौन जा रहा है नमाज पढ़ने? You're going to go for a prayer. अच्छा, अब mindfulness ये नहीं है कि आप अपने आप को भी नमाज में भूल जाएं. You are going for prayer, so you should be aware of yourself too. ठीक है? But it's important that you're going for Allah subhanahu wa ta'ala, so you should be more aware of Him. एक जो गलती हमसे ये हो जाती है, हम नमाज में समझते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी चीज़ का ख्याल नहीं आएगा. डेफिनेटली अल्लाह का सुप्रीम ख्याल रहेगा, लेकिन बाकी कुछ चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते. एंड स्पेशली व्हाट यू आर डूइंग यू कैन नॉट इग्नोर इट. इस चीज़ को भी नेक्स्ट स्लाइड में बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि आप अपने आप को कैसे इग्नोर नहीं कर सकते. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट यू हैव टू प्लान टू गिव अटेंशन टू व्हाट यू आर डूइंग and you have to plan to give attention towards Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है? ये सब यूँ समझ लें, जब आप किसी से बात करने जाते हैं, आपकी तवज्जो तो सारी होती है अगले बंदे की तरफ अक्सर होगा कि अगला बंदा क्या कह रहा है या क्या सुन रहा है, जब आप उसे सुनने जाते हैं. लेकिन जब आप बोल रहे होते हैं, फिर आपकी तवज्जो सारी किस पर होती है? आपके अपने अल्फाज पर होती है, और इस चीज़ पर तवज्जो होती है कि दूसरा बंदा आपको सुन रहा है. सेम लाइक जब आप नमाज में जाएंगे, तो आपकी तवज्जो ये रहेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, और दूसरे आपकी तवज्जो इस पर रहेगी कि अल्लाह ताला इसे सुन रहे हैं. इसके कोर नॉलेज से सुने. इफ़ आई एम गिविंग अ प्रेजेंटेशन टू यू ऑनलाइन, तो मुझे भी पता है कि आप सब मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी तवज्जो तो इस पर है मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, किस तरह बैठा हूँ, किस तरह जेस्चर्स दे रहा हूँ. एक मेरी तवज्जो इस पर है. दूसरी मेरी तवज्जो ये भी है कि आप सब अभी सुन रहे हैं, पीपल आर लिसनिंग टू मी. ठीक है? सो these are the two things towards which I am mindful. That's why I'm speaking very accurately. नमाज ये है कि देखें, जब आप किसी और बंदे से जिस तरह आप अटेंटिवली होकर बात करते हैं और सोच सोच के बोलते हैं, सेम लाइक एस ऑफ नमाज, you have to do a lot of exercise before namaz to just be mindful and aware that what you are doing in namaz, be aware of it, and you should be aware that for whom you are doing it. Okay? So, अब हम ये सवाल होता है कि अटेंशन हम नमाज में किस चीज़ को दें. सो अटेंशन टू व्हाट यू आर डूइंग. सो द फर्स्ट थिंग इज यू कैन नॉट इग्नोर योरसेल्फ एंड यू कैन नॉट इग्नोर व्हाट यू आर डूइंग इन नमाज. सो व्हाट यू आर डूइंग इन नमाज, इसमें यह है कि आपने अपने एक्शंस को अवेयरनेस देनी है और आपने अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना है. ठीक है? और आपके एक्शंस में जो सबसे ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट है, वो है क़िराअत. ठीक है? That's important. That's why I say that you cannot ignore yourself. और आपको अपने आप इग्नोर करने में क्या, आप जो क़िराअत बोल रहे हैं, ये भी आप भी बोल रहे हो. What you are saying from Holy Quran, आप उसके वर्ड्स की तरफ भी तवज्जो दे सकते हैं. I hope that we get some time to meet in a one-to-one workshops, and we will do this exercise. That we will be saying at least 1 or 2 or 3 words, and we will try to bring attention towards them. Okay? You can give attention to their meaning, but on the surface level, you can give attention to their sounds. It also comes in hadith that fuqaha also says that कि आप नमाज पढ़ें तो ज़रा सी ऊंची आवाज़ में पढ़ें कि आपके कानों तक आवाज़ पहुँचे. If you are reciting alone, तो आप ऊंची आवाज़ में तिलावत कर सकते हैं. So you can give attention to words, you can give attention to meaning, you can give attention to words. That's why we say that when we are going for namaz, we're going for qiraat, you have to give attention to that qiraat, and you have to give attention to that Quran, what you are saying, what you are reading. Okay? Then you also have to give attention to supplications. So du'aएं आप पढ़ रहे हैं, you have to give attention to them too. You are saying them, so you have to give attention to them. And when you are giving your attention to them, maybe your attention towards Allah subhanahu wa ta'ala decreases, but that
doesn't nullify your prayer, okay? So jurists will Allah subhanahu wa ta'ala increase our knowledge in this area, but it's still a starting phase of the researches in this area. And what is our current understanding is that it shouldn't nullify your prayer, mindfulness, okay? That although the ultimate goal is to give attention to Allah subhanahu wa ta'ala, but before giving attention to Him, you have to give attention to what you are doing, and that's a basic element of mindfulness. So whatever you're doing, whatever actions you're performing, you have to observe those actions, and you just don't have to ignore it. So that's important of mindfulness. So जब आप दुआएं पढ़ रही हैं और अगर आपको उन दुआओं की तरफ ध्यान जा रहा है, it's completely fine, and that is an aspect of mindfulness in prayer. That while saying the prayers, your attention should go towards those prayers. In your consciousness, you're maintaining that someone is listening to me, but that would be taking the partial component of your consciousness, and the major component of your consciousness awareness will be going towards that supplication. Same like when you will be saying the Qiraat. अच्छा, अपनी attention को यूँ समझे कि attention हमारी सिर्फ ये नहीं होती कि एक वक्त में एक चीज़ पर होती है. Attention एक वक्त में हम 4 से 5 चीज़ों तक दे सकते हैं, मैक्सिमम 9 थिंग्स पर, ठीक है? इस चीज़ पर बात हुई है रिसर्चेस में, साइकोलॉजी में मैजिक नंबर 7 +- 2 रिसर्च में भी कि एटलीस्ट 7 एलिमेंट्स कैन कम इन योर अटेंशन एट अ मोमेंट. तो ये कि अटेंशन एक वक्त में आप काफ़ी चीज़ों पर दे रहे हो. व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन प्रेयर, maybe you're giving attention to Allah subhanahu wa ta'ala, you're giving attention to your words, you're giving attention to its meaning, and you're giving attention to your postures, you're giving attention to the present moment. These all things collectively take you at a situation of mindfulness. But initially you have to exercise to give attention to one element. Initially you may have to give attention to just your postures, then you do the exercise to bring attention to your words, and then you combine these all things. Take analogy of driving. For example, when you start driving, which you do, there are multiple things which you have to do during driving, right? You have to shift gears, you have to use the race and brake and clutch, and you have to use the steering, you have to be focused on mirrors, right, left, and back mirror. So these are the multiple things which you have to do in a present moment. And while driving, you are giving attention to each and every aspect of it. But when you were in training phase, you were doing each aspect one by one. But with practice and practice, you become able to do all of these things without giving much effort. Okay, but still, it is said that why it is said that while driving you shouldn't be using mobiles, or while driving why shouldn't be using mobiles? Because mobiles, they take your attention a lot. And because of that, sometimes they consume your attention too much that your mind is then not able or capable to give attention to other aspects of driving. Okay? So what I wanted to explain with this analogy was that namaz mein, there are multiple things which are going, and you have to give attention to all of them. But start with one aspect, give attention to it, do the practice on it, then add something, and then there will be the coherent experience of giving attention to Allah subhanahu wa ta'ala and to your actions which you're doing. Okay? So content and relations, for example, when you're offering supplications, you have to give attention towards the content, and you have to relate yourself with that content too. And the last things is about the body postures. What are the body postures, like raising hands, standing, lying, prostration, sitting, or going in the tashahhud. These all are our body postures. Acha, mindfulness में important चीज़ होती है, you have to be closely related with your body, and you should feel your body. So how to develop mindfulness with body postures? While transiting the body postures, try to give attention to them. What do we mean by transiting the body postures? For example, when you're moving yourself from one position to another position, you should give attention. Okay? For example, when you are saying the takbir tahrima, as I explained you in the beginning, you have to give attention to your hands. When you are
when you are bringing your hands down your belly और आप हाथ बांध रहे हैं तो उनको तवज्जो दें. Try to give attention to your hands at that moment. ये नहीं कि फौरन से ही हाथ बांधते तस्बीह शुरू कर लें. Take a deep breath. 2-3 सेकंड्स का वक्फा दें और उस दौरान अपनी बॉडी पोस्चर्स को ऊपर तवज्जो दें. Feel that physical sensation. ठीक है. जब रुकू में जा रहे हैं तो just give attention to your hands, how they're going to its knees, how they're grasping your knees and how your knees are feeling in relationship with when they're coming in contact with your palm and your hands. Try to give attention to it for a very brief minute, for a very brief moment, 2 or 3 or 4 seconds maybe, okay? So give attention to your physical postures while you are transiting from one posture to another, especially when you're bowing down, when you're going for prostration, when you're sitting or standing. So you have to give attention towards them. Purpose of saying these all things is that कि नमाज में आप जो भी कर रहे हैं उस चीज़ की तरफ भी तवज्जो दें. एक अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ तवज्जो देनी और एक जो नमाज में आप कह रहे हैं उसकी तरफ अपनी तवज्जो को लेकर जाए. आप किरात जो बोल रहे हैं उसके अल्फाज को सुने. Try to give attention to its words, your sound, your voice, that meaning. जब आप हाथ बांध रहे अपने हाथों की तरफ तवज्जो लाएं, रुकू में जाने अपने हाथों की तरफ तवज्जो लाएं, घुटने की तरफ. और ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जब आप तवज्जो को इस तरफ लाएंगे, किरात की तरफ लाएंगे, रुकू में हाथों की तरफ लाएंगे, अपनी जो भी आप दुआएं पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, रुकू में जाते हो सजदे की तरफ, जब उनकी तरफ तवज्जो लाएंगे अल्टीमेटली आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में आएगा. जब वो प्रेजेंट मोमेंट में आएगा तो दैट इज कॉल्ड एज माइंडफुलनेस. फिर वो सारे बेनिफिट्स आपको प्रेयर के मिलेंगे जो कि एक्सपेक्टेड है. आई होप दैट थिंग इज क्लियर नाउ. सो द सेम फोन कॉल इन नॉलेज ही. और ये था कि हम लोगों ने जिस पहली स्लाइड में ये बात की कि that you have to give attention to yourself, and then second thing is that you have to give concentration towards Allah subhanahu wa ta'ala. It's a concentration towards Allah subhanahu wa ta'ala. The same analogy that you imagine speaking on the phone, think of a time and imagine the Allah's presence in the same way that Allah subhanahu wa ta'ala is there. So Allah subhanahu wa ta'ala की तरफ आपकी अपनी concentration कैसे आ सकती है, उसके लिए मैंने steps कुछ बताए हैं, बनाए हैं, यहाँ पर आपको सच शेयर करता हूँ. You have to close your eyes and create a mental image of being in a sacred space. ये नमाज से पहले आप करें, okay? You can do it right now even. Just close your eyes and feel yourself that you're in some peaceful and calm place, okay? And then give some time to yourself to feel that area. आप अपने आंखें बंद करें और अपने आप किसी पीसफुल और काम प्लेस पर इमेजिन करें. ऐसा प्लेस जो आपने आज तक जिंदगी में देखा, आपकी इमेजिनेशन में या देखे, जो सबसे ज़्यादा पीसफुल है. You're alone in that place. Feel the temperature of that environment. Feel the air. Now imagine Allah subhanahu wa ta'ala is in front of you. You cannot see him directly. There are a lot of barriers of universe. Maybe there is a huge barrier of light and he is beyond them. We cannot visualize him. We cannot imagine him. But he's there. He's seeing you. He's listening to you. He's seeing you sitting over here. Just imagine. Just concentrate towards Allah subhanahu wa ta'ala. Are you able to concentrate towards him? Perfect. Now you can open your eyes. Good. That is a brief exercise to bring your concentration towards Allah subhanahu wa ta'ala. You have to imagine him in front of you. You cannot see him. There is a barrier of universe or whatsoever. It's beyond these things. Imagine him. He's seeing you. He's listening. That is a concentration which you bring towards Allah subhanahu wa ta'ala. That's mindful attention, okay?
तो ये अटेंशन अब नमाज से पहले बैठ के इसकी प्रैक्टिस बेशक करें 1-2 मिनट, और नमाज में आकर खास तौर पर जब आप रुकू सजदे में जाएं तो तब आपने इस अटेंशन को, इस कंसंट्रेशन को ज़्यादा अपने ऊपर लाना है. Some Islamic scholars like Maulana Ashraf Ali Thanvi, they say that at least bringing attention towards Allah subhanahu wa ta'ala in all arkan of namaz for one time, it's important. Okay? वो ये कहते हैं कि नमाज के जितने फ़र्ज़ अरकान हैं उन सब के बीच में एक बार एटलीस्ट अल्लाह ताला की तरफ अटेंशन लाजमी जाए. और जब हमने स्केल कंस्ट्रक्ट किया तो उसमें इतनी ही थी कि नमाज के जो 6 फ़राइज़ हैं, तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा और क़ादा आखिर, ठीक है, ये 6 फ़राइज़ हैं नमाज के. इनमें एटलीस्ट हर एक में अटेंशन अल्लाह ताला की तरफ एटलीस्ट एक बार जाए. जितनी ज़्यादा देर के लिए रहेगी उतना ही अच्छा, लेकिन एटलीस्ट एक बार के लिए जाए. जस्ट मेक इट योर एम. और ये अटेंशन की यू जस्ट इमेजिनिंग कि आपके दिमाग में सिर्फ इतना आ जाए कि दैट ही इज सीइंग यू, ऑब्जर्विंग यू. इतनी भी थॉट्स आ जाए, थोड़े से सेकंड्स के लिए आ जाए, 2-3 सेकंड के लिए. Going for the mindfulness, okay? So it's about giving the concentration towards Allah subhanahu wa ta'ala. So now third thing, sorry, it's not the number 2, it's the third thing, and it's about attitude. माइंडफुलनेस में हमने कहा ना 3 चीज़ें हैं, जिससे हमने शुरू में बात की, जो हमने इंग्रेडिएंट्स साइकोलॉजी से लेकर आए हैं. फर्स्ट इंग्रेडिएंट वाज ऑफ इंटेंशन, सेकंड वाज अटेंशन, एंड थर्ड इज ऑफ एटीट्यूड. इंटेंशन यानी नीयत पर हमने बात की कि इट्स अ प्रोसेस. नीयत इज़ नॉट सिंपली एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस जिसमें आप अपने काफ़ी इवेंट्स है, काफ़ी चीज़ें जो आपको करनी पड़ती हैं अपने माइंड को प्रेजेंट में लाने के लिए. देन इंटेंशन के बाद अटेंशन, कि अब हम अटेंशन किस चीज़ को दें नमाज में. तो मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ों को देनी है अटेंशन. एक आपने अपने आप को, अपने एक्शंस को, जिसमें आप क्या किरात कर रहे हैं, आपके हैंड्स किस तरह मूव कर रहे हैं, और आप क्या दुआएं मार रहे हैं. इन 3 चीज़ों को आपने अटेंशन देनी है, ठीक है. और दूसरी किसको अटेंशन देनी है, आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तवज्जो देनी है. तो वो तवज्जो कैसी होगी, उसकी हमने एक छोटी सी ब्रीफ सी एक्सरसाइज की है. ओके. नाउ थर्ड थिंग इज अबाउट एटीट्यूड, कि नमाज में हमारा एटीट्यूड क्या होगा. यानी नमाज में हम लोग चीज़ों को जज कैसे करेंगे. सो एटीट्यूड नमाज में it should be nurtured with self-compassion. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि नमाज में अपनी ऊपर क्रिटिकल मत हो. आप जितनी एफर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट योरसेल्फ. ओके. हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब होने की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम जितनी भी एफर्ट करते हैं, हम उसके बाद अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं. इस्तग़फ़ार doesn't mean that criticizing your positive deeds even. Mindfulness is a concept in which even if you are doing a little bit, just appreciate yourself, and thanks to Allah that He has blessed you to perform even this deed, and wish for doing it more good, but appreciate whatever you have done. ठीक है. नमाज में इम्पॉर्टेंट ये है कि दूसरा आपका क्या है कि जेंटल अवेयरनेस. अपनी कोशिश करें कि आपकी अपनी प्रेजेंट मोमेंट में रहे. Approach each moment of Salah with a gentle and kind attitude towards yourself and your practice. आपका एटीट्यूड अपनी ज़ात की तरफ और अपनी नमाज की तरफ बिल्कुल एक काइंड एटीट्यूड हो. उसको अगर आप भार समझेंगे अपने ऊपर, तो आप उसमें माइंडफुलनेस नहीं कर सकेंगे. आप अटेंशन नमाज को तभी दे सकेंगे जब नमाज की तरफ आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और अपने लिए भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा. ओके. दूसरी बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन माइंडफुलनेस इज दैट यू शुड बी नॉन जजमेंटल टुवर्ड्स योर प्रेयर. यू शुड बी नॉन जजमेंटल, ठीक है. एंड स्पेशली यू शुड ऑल्सो बी नॉन जजमेंटल टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्शंस. माइंडफुलनेस की कोई भी एक्टिविटीज में हम ये कहते हैं कि आपको डिस्ट्रैक्शंस आए, बी रेडी फॉर देम, ऑब्जर्व देम, ठीक है. जो भी आ रही है, चाहे गुड डिस्ट्रैक्शंस, बैड, कोई भी थॉट्स आपको नमाज में आ रही है, observe them, don't label them, don't criticize them, and let them. किसको मैं नॉलेज के साथ कहते हैं कि आप यूँ समझें कि आप नमाज के लिए अगर खड़े हो रहे हैं, आपको कोई भी थॉट आती है, just imagine that something is coming in my stream of thoughts and it will just pass. आप यूँ समझ लें कि एक नहर आपकी जा रही है,
कोई चीज़ यहाँ से आ रही है और बस उसको फोकस, अगर आपने उसको तवज्जो दी तो आपकी अपनी नहर का पानी उसे अपने साथ बहा के फिर ले जाएगा और वो आपकी तवज्जो के साथ साथ आगे चलता रहेगा. Let them come and let them go. And gently bring your attention back towards the present moment. शुरू में ये attention देने का काम बड़ा मुश्किल होता है, okay? लेकिन with practice it becomes smooth. तो mindfulness ये है कि आपने अपने आप को label नहीं करना किसी भी thoughts को, good या bad. Simply observe them, let them pass, and be patient in doing this concentration activity, okay? And last is कि attitude के बीच में, not last but not least, कि आपका attitude क्या है उसमें, it should be full of gratitude, okay? Gratitude क्या है कि sense of thankfulness to you first, then thankfulness to Allah subhanahu wa ta'ala, कि अपने आप को भी शुक्रिया अदा करें और अल्लाह ताला को भी शुक्रिया अदा करें कि should be thankful to you. Yes, I have come towards नमाज में नमाज पढ़ी, जितनी भी attention दे सकता था मैंने दी. I've tried my best to perform it in the best manner. I've tried to take the intention to perform, to give the attention, to cultivate positive attitude, and this all was blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. So appreciate yourself and say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So this attitude is important, ठीक है? माइंडफुलनेस के लिए क्या एटीट्यूड इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप माइंडफुलनेस की क्रक्स हासिल नहीं कर सकते हैं. यू शुड बी नॉन जजमेंटल फॉर योर प्रेयर, फॉर योर एक्शंस, and for all thoughts which are even coming during prayer. You should not be criticizing your prayer, and you should be thankful for even a small element of the positivity which is coming from prayer, okay? नमाज में अगर एक छोटा सा एलिमेंट पे पॉजिटिविटी का आ रहा है, जस्ट अप्रिशिएट इट. Okay, so it's all about mindfulness. Remember, last thing is that remember, mindfulness takes practice. When you're practicing mindfulness and you get distracted, just gently bring your attention back to the aspect of Salah with kindness. बार बार इसको करते रहेंगे तभी माइंडफुलनेस तक पहुंचेंगे. माइंडफुलनेस पहले दिन से आराम से नहीं हो जाती. It takes time, it takes practice, it takes time, and it takes practice. That's the end of my talk. Summing up, आज की टॉक पे हमने किस चीज़ पर बात की? हमने बात की किन चीज़ों पर. मैं सिर्फ पहली स्लाइड पर फिर से जाके सारा कुछ रिपीट करूँगा आप लोगों के लिए. Just summing up, sorry, I'm going back. Okay, going towards the first slide. We talk about these all things. Quick review. Okay, we talked about mindfulness in psychology. We talked about Salah and we talked about mental health. We discussed that mindfulness is related with mental health, and there are many psychological experiences which are in Salah. One of them is mindfulness. We discussed that previous researchers have shown that that mindfulness in Salah is related with mental health. Quran emphasizes on performing prayer with mindfulness, so we must give a positive attitude towards prayer. ठीक है, तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की. Now it's about 1 hour and 15 minutes. I'm putting a remaining time of this session for question and answers. I don't know how we'll be online with you on the day of lecture or not, or the day of session or not. If I'm online, I will be taking your live questions. If not, then for sure you can share your questions for discussion with me, and I will be very happy to